Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे special classes है वहाँ पर आप लोग live real-time interaction कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of this special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to this teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real-time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through polls. So poll leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले you can download the Unacademy Learner app. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. देन नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू एंटर योर मोबाइल नंबर एंड OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. देन यू विल गेट वन OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name, then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. You can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBSE classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBSE क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get the notified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. So friends, what we will study today. So today's topic is internet security. So we have seen some of its points in previous lecture, that is introduction about internet security, then common internet security parameters हम लोगों ने देखे थे.
Then we have seen that is proper use of passwords. उसमें हम लोगों ने ये point देखा था, the ways in which your passwords may get cracked. So now let us move towards the next point, that is choosing good passwords. ठीक है, good passwords कैसे चूज करने हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी स्टडी करके लेते हैं आज. सो देखिए, पासवर्ड जो है आजकल आप इंटरनेट पे कोई भी अकाउंट यूज कीजिए, ऑब्वियसली उसको पासवर्ड तो लगता ही है. सो चूजिंग इफेक्टिव पासवर्ड्स इज वेरी क्रूशियल एंड इक्वली it is crucial to keep them confidential. Also, it is recommended that you change your passwords after few months. हमेशा आपका पासवर्ड जो है आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको चेंज करना चाहिए. So while choosing or deciding passwords for you, you should keep in mind the things like that. That is, no dictionary words, proper nouns or foreign words are used. Then, no personal information. Use longer passwords. Use passphrases to remember complex passwords. And do not repeat the passwords on different websites. So, we will see this one by one. That is how to choose or how to keep the following things in your mind like that. So, first one is the no dictionary words, proper nouns or foreign words should be used for choosing the good passwords. So what we can say about these things, that is abhi dekhiye, you should avoid using the conventional words as passwords. By the same token, they should also avoid regular words with numbers tacked on to the end and conventional words that are simply written backwards. Okay, कन्वेंशनल पासवर्ड्स आप लोग ज़्यादातर यूज़ ना करें, जैसे कि डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, या फिर प्रॉपर नाउंस आपका खुद का इंफॉर्मेशन है वो भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए. सो लाइक वाइज दैट, सो अवॉइड यूजिंग द कन्वेंशनल वर्ड्स एज द पासवर्ड्स. देन नेक्स्ट वन इज द नो पर्सनल इंफॉर्मेशन. सो इट इज अलार्मिंग easy for hackers to obtain personal information about prospective targets. आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आपको यूज नहीं करनी चाहिए यहाँ पर. सो इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट यूजर्स नॉट इंक्लूड सच इंफॉर्मेशन इन देयर पासवर्ड्स, लाइक देयर नेम्स. आपके खुद का नाम कभी पासवर्ड नहीं लगना चाहिए, या फिर योर सर नेम, योर मिडल नेम. सो लाइकवाइज थिंग्स, आपका डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका मोबाइल नंबर हो. सो ऐसी चीज़ें जो है आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है एज अ पासवर्ड यूज नहीं करनी चाहिए. That is, you should not use your personal information as a password. जैसे कि आपका एड्रेस कहाँ कौन सा है, द प्लेस वेयर यू बिलोंग टू, द प्लेस वेयर यू लिव, यूर सम ऑफ द फेवरेट, लाइक आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, आपकी फेवरेट कार कौन सी है, या फिर आपके कार का नंबर है, आपकी बाइक का नंबर है. सो ऐसी चीज़ें जो है, दैट इज यू शुड अवॉइड यूजिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स while you are choosing the good passwords. Then next point you should remember while you are choosing the passwords, that is use longer passwords. So यहाँ पर देखिए, अगर longer passwords are more secure than shorter ones because there are more characters to guess. So use a mix of uppercase letters, lowercase letters with numbers and special symbols will be always preferred. देखिए, लॉन्गर पासवर्ड आप जितना अच्छा रखेंगे उतना ही क्या होगा, वो वल्नरेबल कम रहेगा अटैक के लिए, वो फिर गेस करने के लिए डिफिकल्ट रहेगा. सो अब कभी भी आप लॉन्गर पासवर्ड यूज कर रहे हो तो उसमें ध्यान रखिए आप कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करें. दैट इज सम लेटर्स मस्ट बी कैपिटल, सम लेटर्स मस्ट बी लोअर केस लेटर्स. उसमें थोड़े से नंबर्स जो है वो ऐड करें फ्रॉम 1 to 9, from 0 to 9, whatever the numbers you want to use, उसका भी मिक्स करें. एंड ये ऑब्वियसली स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर स्पेशल सिंबल्स का भी आप लोग यूज करें. देखिए, जितना आप लोग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखे हुए उतना ही अटैकर को उसको गेस करने में परेशानी होगी. दैट्स व्हाई यू शुड यूज द लॉन्गर पासवर्ड्स. देन नेक्स्ट वन इज द यूज पास फ्रेजेस टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स. नाउ consider using the passphrases where you can. So for example, like you are going to write, suppose I am writing my password likewise, my password in which P is capital, my password
$4. सो अगर ऐसा फॉर एग्जाम्पल ऐसा आप लोग पासवर्ड यूज कर रहे हैं, पास फ्रेज यूज कर रहे हैं, सो वो क्या रहेगा, बहुत ही इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बिकॉज इट हैज मेनी कैरेक्टर्स एंड इट इंक्लूड्स द लोअर केस एंड कैपिटल लेटर्स, द नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। सो देखिए उसका मैं एक एग्जांपल ही आपको दिखा देती हूँ। सो देखिए ऐसे पास फ्रेज अगर आप लोग यूज करेंगे, सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल। देखिए माय पासवर्ड, देन आई एडेड वन स्पेस, देन उसमें मैंने डाल दिया कुछ $, और उसमें इज $45। सो लाइकवाइज यू कैन यूज, देखिए ये पासवर्ड जो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, देखिए यहाँ पर लोअर केस लेटर्स हैं, यहाँ पर P अपर केस लेटर है, उसके बाद यहाँ पर स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बाद $, एक स्पेशल कैरेक्टर है, एंड इज, उसके बाद और कुछ लोअर केस लेटर्स हम लोगों ने लिए हैं, एंड 45, दैट इज वी हैव टेकन सम नंबर्स। सो इन दिस वे you can use the passphrases to remember the complex passwords. Then next one is the do not repeat passwords on different websites. So don't assume that once you have developed a strong password, you should use it for every system or every program. So if attackers do guess it, then they would have access to all of your accounts. So ऐसा बिल्कुल कंसिडर मत कीजिए कि ठीक है आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया है एंड बेस्ड ऑन दैट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग क्या करोगे, बाकी के भी आपके कुछ अकाउंट्स है, सपोज आपका फेसबुक का अकाउंट है, सेम वही पासवर्ड आप लोगों ने इंस्टाग्राम के लिए डाल दिया। बट ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर लग बाई चांस अटैकर ने अटैक करके आपका पासवर्ड गेस कर लिया तो आपके अदर अकाउंट्स के डिटेल्स उसके पास जाएंगे बाय हैविंग योर पासवर्ड्स। सो do not repeat the passwords on different websites. So what we can say, in a nutshell, you should use these techniques to develop unique password for each of your accounts. So just I will dictate you the what are the techniques. Okay, so choosing a good password. So first one is the use different passwords on different systems and accounts. Okay, डिफरेंट सिस्टम्स एंड अकाउंट्स के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट पासवर्ड्स यूज करने हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट यूज पासवर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी easily accessed or guessed. So do not use the passwords that are based on personal information that can be easily accessed or guessed. ऐसे पासवर्ड्स मत लिखिए जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हो एंड दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड हो, इसको गेस भी किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ capital and lower case letters, the numbers and what we can say special characters. ठीक है, कैपिटल लेटर्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का, उसके बाद लोअर केस लेटर्स का, नंबर्स का प्रॉपरली यूज करिए, उसको प्रॉपरली कॉम्बिनेशन यूज करिए। देन नेक्स्ट वन इज डोंट यूज वर्ड्स दैट कैन बी
found in any dictionary of any language. ठीक है, ऐसे डिक्शनरी वर्ड्स जो है जो कि इजीली फाउंड किए जा सकते हैं एनी डिक्शनरी ऑफ एनी लैंग्वेज, सो डोंट यूज दैट वर्ड्स. एंड लास्ट वन इज डेवलप mnemonics such as passphrase for remembering complex passwords. ठीक है, सो ऐसे आप लोग जो है वो पासवर्ड develop mnemonics such as passphrase for remembering complex passwords. So in this way you can choose a good password. So the next point we are going to study is confidentiality of the information. So internet जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इंटरनेट इज अ public platform mostly. So the sites you visit, the things you search on it, the posts that you put on social networking sites are all visible to the public. But there must be some information like your credit history or bank details, your email accounts, which you do not want to make public. लेकिन इंटरनेट पे ज़्यादातर क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है. जैसे कि आपकी कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, वहाँ पर आपकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होती है. बट एट द सेम टाइम देयर मस्ट बी सम कॉन्फिडेंशियलिटी, लाइक आपके क्रेडिट कार्ड की और बैंक डिटेल्स की हिस्ट्री हो, आपके मेल अकाउंट्स हो, उसके पासवर्ड्स हो, विच यू डू नॉट वांट टू make public, that is you want to keep this information confidential. So similarly on your computer system or in a private network, you would certainly want that crucial information is protected and is not publicly visible. So वैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम पर या फिर आपके प्राइवेट नेटवर्क पर आपको एक you want certainly that crucial information is protected. एक crucial information जो है वो आपकी protected है and is not publicly visible. Now, the confidentiality of an information, it does what? It ensures that only authorized users get access to the sensitive and protected data. That is nothing but the confidentiality of an information. So, ये क्या ensure करता है? It ensures that only authorized users get access to sensitive and protected data. So, now we will see the practices to ensure confidentiality of an information. So अभी हम लोग कुछ टेक्निक्स देखेंगे based on which the confidentiality of an information can be done. That is computers, networking, internet, these are all inevitable. So you cannot avoid this as these are modern age tools, obviously. But you surely can follow certain practices to safeguard your data and ensure its confidentiality. आप लोग उसको अवॉइड किया नहीं कर सकते इंटरनेट को एंड नेटवर्किंग को, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द मॉडर्न एज एंड इट इज़ ऑब्वियसली द मॉडर्न एज टू. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस देखेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट प्रैक्टिसेस हाउ यू कैन सेफगार्ड योर डेटा एंड इंश्योर इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी. So best practices which are used to ensure confidentiality are as we are going to see this one by one. First one is the what we can say, that is use firewall wherever possible. Then next one is the control browser settings to block tracking. Then next one is the browse privately wherever possible.
The next practice is be careful while posting on internet. After that, you can see that it ensures safe sites while entering crucial information. The next thing which you can do is carefully हैंडल ईमेल्स जो है आप लोग केयरफुली हैंडल करें. देन नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क्स. देन अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं. सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिसेस which we are going to see one by one. So first one is use firewall wherever possible. So your system must be secured such that only authentic users can connect to it. The firewall is one very good solution for it. So firewall is a program that monitors all communication and traps all illicit packets. So most operating system now come with the firewall pre-installed. इनबिल्ट फायरवॉल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहले से मौजूद होता है. So however, some such as Windows firewall only block suspect incoming communications, like leaving completely open access to the internet from your machine. So thus it is recommended that you install a firewall that can monitor both incoming and outgoing communication and traps the illicit. Then next point is control browser settings to block tracking. So students, you already know about it. That is, the websites can track your surfing on their sites by the IP addresses. अब websites आपके IP addresses जो है उसको track कर वो क्या कर सकते हैं? They can surf to your machine also. So, and your related system information, including your system's names and internet network address, INET address, that often be unique for your computer. So, यहाँ पर देखिए, search engines which are generally record your queries together with your computer identification and building up the profile of your interest over time. So, to minimize these types of threats, you can turn your default browser settings to exclude the cookies, especially the third-party cookies, since they can be used to build up detailed profiles of your surfing patterns over the time. So आपको क्या करने हैं? cookies जो है वो disable करनी है. So आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? You can control your browser settings to block the tracking. आपकी tracking information जैसे कि आपका IP address है या फिर आपका इंटरनेट INET एड्रेस जो है आपका एक यूनिक मशीन एड्रेस होता है, वो आपको अगर वेबसाइट्स को ट्रैक करने से रोकना होगा तो यू हैव टू कंट्रोल योर ब्राउजर सेटिंग्स टू ब्लॉक ट्रैकिंग. देन नेक्स्ट वन इज ब्राउज प्राइवेटली wherever possible. Yes, to avoid the tracking by websites, you should try to browse internet privately wherever possible. So this way website would not be able to store cookies on your computer which give you information about your search pattern and surf history. So try to generally browse privately wherever possible. Then the next point is be careful while you are posting on internet. आप लोग इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो be careful about that. So you should know that posting is a public. आप लोग कुछ भी पोस्ट करोगी तो वो पब्लिक ले हो जाएगा. Then when you post anything to the public internet such as social networking site like Instagram, Facebook, Twitter and so on. So news groups, mailing list or chat room, you generally give up the rights to the content and any expectation of privacy or confidentiality. So in most countries, anything you post to a public space can be saved, archived or duplicated or distributed and published even years later. So by anyone in the same way as a photograph taken in the public space like a city park. So ensure that you never post your crucial information publicly, like your personal details like your address, your mobile phone number, your bank details, your credit card details, etc. on the public sites. So these are some of the practices to ensure the confidentiality of an information.
So the book which I referred for today's lecture is Information Technology by Sumita Rao for class 10, code 402 under CBSE. So now let's get started with today's quiz session. So friends, let us start with today's quiz session. So you will be having total 20 questions and each question will be having 1 minute. So let's get started with that. So here is question number 1. What is long form of LAN? Options are A. Local area network, B. Local allocated network, C. Light area network, and D. Locally allocated network. Your time starts now. So the correct option is A. Local area network is the long form of LAN. The next question number 2 is here on your screen. What is long form of MAN? M-A-N. Options are A. Metropolitan area network, B. Major allocated network, C. Multiple area network, and mainly allocated network. Your time starts now. Time up. So correct answer is A. Metropolitan area network is the long form of MAN. So the next question is here on your screen. What is long form of WAN? Your options are A. Wired area network, B. Wide allocated network, C. Wide area network, and D. Widely allocated network. So your time starts now. Time up. So correct option is C.
Wide area network is the long form of WAN. So the question number 4 is here on your screen. Which of the following is not an example of instant messaging? Your options are A. Google Talk, B. Google Hangouts, C. WordPress, and D. Facebook Messenger. So your time starts now. Time up. So correct answer is C. WordPress is not an example of instant message. Google Talk, Google Hangouts और Facebook Messenger जो ये सारे instant messaging के examples हैं. Then the question number 5 is here on your screen. Which is used for sending text messages online? Your options are A. Instant messaging, B. Email, C. Website, and D. Blog. Your time starts now. So the correct option is instant messaging is used for sending text messages online. Correct option is A. Instant message. The question number 6 is here on your screen. We can do chatting on an IM client. True or false? Your time starts now. Yes, it is obviously true that we can do chatting on an instant messaging client. So correct option is A, true. So we will move towards the question number 7. Networks are useful because A. No one copy your files. B. You only need one printer per network.
C, the computer use less electricity, and D, each user of the network can access files more easily. So your time starts now. So correct answer is D. Each user of the network can access files more easily. That's why networks are useful. Then question number 8 is here on your screen. Internet may be termed as an example of options are A, LAN, B, MAN, C, WAN, and D, all of these. So your time starts now. Yes, internet may be termed as an example of LAN, MAN, and WAN. So correct option is D. All of the above can be considered as the example of internet. Then the question number 9 is here on your screen. The act of writing a post for a blog is called A, blogger, B, blog, C, blogging, and D, blogosphere. So your time starts now. So the correct answer is C, blogging. Yes, act of writing post for a blog is called as the blogging. So the question number 10 is here on your screen. A person who writes a blog is called A, blog, B, blogger, C, blogging, and D, blogosphere. So your time starts now.
a person who writes a blog is called as the blogger. So correct option is B, blogger. Question number 11 is here on your screen. Out of the following, which is not the blogging site? A, my blog, B, blogger, C, WordPress, and D, live journal. So your time starts now. So time up. Correct answer is A, my blog is not a blogging site. So question number 12 is here on your screen. Which of the following are Government of India's startup initiatives? Your options are A, Startup India, B, Make in India, C, both A and B, and D, none of the above. So your time starts now. So the correct option is both A and B. Yes, Startup India and Making India. Both are the Government of India's startup initiatives. So the question number 13 is here on your screen. Successful entrepreneurs as role models generate more entrepreneurship. So options are A, true, B, false. Your time starts now. So, yes, it is true that the successful entrepreneurs as role models generate more entrepreneurship. So, correct option is A, true. Now, we will move towards the question number 14. Entrepreneurship degrades the standard of living. True or false? So, your time starts now.
time up. It is obviously not true that entrepreneurship degrades the standards of living. So correct answer is B, false. So let us move towards the question number 15. Which of the following is not developed by entrepreneurship? A, society, B, economy, C, nation, and D, none of the above. So your time starts now. देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सोसाइटी, इकोनॉमी और नेशन तीनों को भी डेवलप करता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप? सो करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों को डेवलपमेंट में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज डी, none of the above. So the question number 16 is here on your screen. Which of the following is an example of online transaction? A, e-shopping, B, e-ticketing, C, both A and B, and D, none of the above. Your time starts now. So both e-shopping and e-ticketing are options of examples of the online transaction. So correct answer is C. Both A and B are the example of online transactions. So we will move towards the question number 17. For entering personal and financial information for online transactions, a URL must begin with A, FTP, B, HTTP, C, HTTPS, and D, any of these. So your time starts now. So time up. For entering personal and financial information for online transactions, a URL must
begin with HTTPS, that is Secure Hypertext Transfer Protocol. तो देखिए पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, सो उसकी सिक्योरिटी जरूरी होती है, सो दैट्स वाई सिक्योर HTTP यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा. The question number 18 is here on your screen. Which of the following OS does not come under Linux OS? That is A BSD, B Red Hat, C Ubuntu, and D CentOS. So your time starts now. So BSD is the OS, that is operating system, which does not come under Linux OS. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए रेड हैट उबंटू एंड CentOS जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं, whereas BSD does not come under it. So correct answer is A BSD. So the question number 19 is here on your screen. How many sustainable development goals target are there? Options are A 48, B 169, C 15, and D 17. So your time starts now. So there are total 169 sustainable development goals targets are there. So the last question number 20 is here on your screen. How many sustainable development goals are there? A 48, B 169, C 15, and D 17. So your time starts now. So there are total 17 sustainable development goals. So correct option is D 17. That is 17. So that's all for today's session, friends. So the next feature for the plus and iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for
plus an iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's crack it. So friends, Unacademy is freedom to learn offer. So this Independence Day, get the freedom to learn. Yes, this is new offer only for CBSE class 9th. So student, this is exclusive offer for CBSE class 9. That is, we are pleased to inform you that is our new exclusive offer for our CBSE class 9 learners. That is, if you take up a CBSE class 9 subscription for 2 years, then you will get the subscription of IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC absolutely free. So what is this IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC category all about? I will tell you about that. You can build the foundation for the IIT, JEE right from class 9th. So it is having the structured courses that will help you to crack the multiple Olympiads like NTSC, IMO and so on. Yes, obviously, and you can win the great national level scholarships. So you can save students 40% on your subscription price. So this is only for the first 500 CBSE learners and the offer can be availed using the educator referral code. So you can use my educator referral code, that is TD Live. So just this is the limited time offer and it is valid from the 11th of August 2021 to the 31st of August 2021. So students gets your subscription now. This is at limited period offer. देखिए दोस्तों, अनअकैडमी हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करती है. सो इस बार जी हाँ, आप लोगों को जैसे कि पता होगा, you are having the last chance to win free Creative Corner subscription. So this offer is going to end on 23rd of the August 2020. म्हणजे हाँ, हमारी क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन की जो चांस है, इट इज गोइंग टू एंड. सो देखिए ऑफर्स कैसे हैं. देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन, लाइक अगर आपका सब्सक्रिप्शन 12, 15 एंड 18 मंथ्स का है क्रिएटिव कॉर्नर का, देन you will get that is a free Creative Corner subscription for 2 months. So whether it is plus or iconic based on your subscription. Then अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है 24, 36 and 48 months का, so you will get the free Creative Corner subscription for 4 months. जी हाँ, 4 महीनों के लिए आपको फ्री क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा. सो ये अगर आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्लस का मिलेगा. अगर आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है तो आपका क्रिएटिव कॉर्नर का आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज दी, अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है फॉर 60, 72 एंड 84 मंथ्स का, इधर फॉर द प्लस और इधर फॉर द आइकॉनिक. सो आपको क्या रहेगा, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलेगा पूरे 6 महीने के लिए. दैट इज टोटली फ्री. प्लस का है तो प्लस का मिलेगा एंड आइकॉनिक का है तो आपको आइकॉनिक का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है टोटली फ्री मिलेगा. सो हरी अप, इट इज लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर एंड यू कैन यूज माय कोड that is given here, that is TD Live, to get the free subscription also for the Creative Corner. So this is your last chance to win free Creative Corner subscription and the offer is going to end on 23rd of the August 2021. So choice is yours. So with Unacademy subscription, you will get with one subscription comes the great benefits like you will get the unlimited access to 7 subjects. 7 सब्जेक्ट्स को आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा एंड यू विल गेट द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टू चूज फ्रॉम. ऑब्वियसली आपको पूरा सिलेबस मिलेगा. यू विल गेट द फुल सिलेबस फॉर NCERT and as well as dedicated plus courses.
And yes, obviously without Unacademy subscription, you will be having the lot of confusion. So jaldi kijiye students, choice is after all yours. So subscribe now before it is too late. So the next exams are, I think, just 2 months, right? So you can get the 10% discount on using the educator referral code. So please use my educator referral code, that is TDLove, so to get the 10% discount. So jaldi kijiye, hurry up, the time is getting over. So friends, we are having the mega launch every Mondays, as you know. So here we are having the Laksh Foundation batch for IIT and JEE aspirants. So ये बैच किसी लिए है, देखिए फॉर CBSE क्लास 9 के लिए भी है एंड CBSE क्लास 10 के लिए है. एंड यस, पहले हम लोग देखते हैं CBSE क्लास 9 के लिए. इट इज गोइंग टू स्टार्ट on the 31st of the August 2021. 31st August को ये बैच स्टार्ट होगी. And we are having the subjects like maths and science with the expert teachers. Yes, obviously you are having the new batches for doubt clearing and NCERT exercises also. And also, अगर आप लोग IIT JEE के aspirants हो for CBSE class 10th, so यहाँ पर भी आपकी जो लक्ष्य फाउंडेशन बैच है वो 31st August 2021 को स्टार्ट हो रही है. सो वी आर हैविंग द स्पेशल स्ट्रेचेस फॉर द मैथ्स एज वेल एज द साइंस. तो देखिए मैथ्स की जो डेट है वो 1 सितंबर को स्टार्ट होती है एंड साइंस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 31st of August 2021. सो वैसे ही CBSE क्लास 10 के लिए IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए एक और CBSE क्लास 10 की बैच रहेगी, दैट इज लक्ष्य फाउंडेशन बैच. It is for maths, it is going to start on 17th of September 2021, and for science it is going to start on 31st of August 2021. So yes, obviously you are having the new batches for doubt clearing sessions and NCERT exercises. So students जो obviously class 9th and 10th के IIT and JEE के लिए interested हैं, they are having the golden chance for it. And yes, you can use my code, that is TDLove, for flat 10% off discount. So that is बात किए students, join our new Laksh Foundation batches. So friends, let me tell you about the basic plan about the plus subscription and also the advanced plan of the basic, that is iconic जो है ये plus का जो है advanced version रहेगा. देखिए plus में जो you are going to have the basic plan to get started. And yes, obviously at Iconic, you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. देखिए plus के features क्या क्या है. You are having the India's best educators as well as the interactive live classes, then live tests and quizzes, then structured courses and PDFs also. And in Iconic में क्या रहेगा, plus के जो features है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ Iconic में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, देन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स आल्सो. सो यहाँ पर एडिशनल क्या है आइकनिक में, देखिए द पर्सनल मेंटर इज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स. यू आर हैविंग द लाइव डाउट सॉल्यूशंस, लाइव इंटरेक्शन विथ योर मेंटर्स आल्सो, एंड यस ऑब्वियसली पेरेंट कनेक्ट भी यहाँ पर रहेगा, दैट इज टीचर पेरेंट कनेक्शन रहेगा यहाँ पर. एंड आपको आइकनिक का स्पेशल स्टडी प्लानर जो है वो भी मिलेगा. सो यू कैन यूज माई कोड, दैट इज TDLove, फॉर फ्लैट 10% ऑफ डिस्काउंट फॉर बोथ, दैट इज ऑन द प्लस एंड आइकॉनिक सॉल्यूशन. सो यू कैन सेलेक्ट द प्लस और आइकॉनिक बेस्ड ऑन योर चॉइसेस. सो उसके प्लान्स कैसे है देखिए. अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10th, 11th, 12th का लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर क्लास 10 का लोगे तो 10th, 11th, 12th आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं. इफ़ यू आर हैविंग द 3 month सब्सक्रिप्शन देन यू हैव टू पे 7,500 फॉर द 3 months, दैट इज 2,500 फॉर per month. Now if you are having the 6 month subscription then you are have to pay 10,000 for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12 month subscription then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15 month subscription then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month.
Now, if you are going for the 24-month subscription, then you will have to pay 25,000 for the 24 months. That is 1,042 per month. If you are going for 36 months, then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. If you are going for the 48 month सब्सक्रिप्शन, उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा एंड 830 विल बी फॉर पर मंथ. देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो बेसिक क्लास का 9, 10, 11, 12 का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए. द सेम केस फॉर 3 months, 6 months, 12, 15, 18, 24, 36 एंड 48 months. देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,000 को रहेगा विथ 4,000 पर मंथ. देन नेक्स्ट वन इज 6 months, 17,000 रहेगा विथ 2,833 पर मंथ. देन 12 months का रहेगा 28,000. देन 15 months का रहेगा 32,000. 18 months का रहेगा 35,000. 24 months का रहेगा 48,000. 36 months का रहेगा 66,000 एंड 48 months का रहेगा 83,000. दैट इज 1,729 पर मंथ. सो वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए. 3 months का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए. 6 month का रहेगा 3,000 के लिए. 12 months का रहेगा 15,000 के लिए. 15 months का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए. देन 18 months का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 25,000 के लिए. लास्टली 36 month का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा. And the same case for the iconic, that is for class 10th, 11th and 12th subscription. That is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000. Then 6 months का 17,000. 12 months का 28,000. 15 months का 32,000. That is 2,133 per month. 18 months का रहेगा 35,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 48,000 के लिए. ऑब्वियसली वैसे क्या रहेगा 36 months का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के. दैट इज 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TDLive, for flat 10% off discount. So student, जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन दैट इज बेस्ड ऑन योर दैट इज प्लस और आइकॉनिक प्लीज सब्सक्राइब करके लीजिए. सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट ला रही है. जी हाँ, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप ट्रस्ट वंस अगेन, अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट. सो इस बार यू कैन विन द स्कॉलरशिप वर्थ ₹2 crore. So link is given in the description box. So obviously this Unacademy Mega Compact is on every Sunday and you can use my code, that is TDLive, for the educator referral codes. So देखिए Unacademy Mega Compact बहुत से आप स्टूडेंट्स ने दिए होंगे, कुछ ने नहीं दिए होंगे. So let me tell you about that. So Unacademy Mega Compact Scholarship Tips, that is formula for your success in CBSE classes 9 and 10. You can win one scholarship worth ₹2 crore. देखिए लास्ट टाइम हम लोग जो ले लिए थे बैचेस उसके 1 crore के थे. So now we are having the 2 crore scholarship offers. So आपकी पढ़ाई के साथ साथ you can win the prizes also. And these Mega Compact Scholarship Tips are for CBSE classes 9th and class 10. So date लिख लीजिए. The upcoming Mega Compact is on August 29th, 2021 at 11 AM. So enroll online. लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं हम लोग पहले से ही. So उसका फॉर्मेट देखिए कैसा रहेगा. You will be having 30 questions and 45 minutes for that. These questions and you are having the 45 minutes to solve this. The test will be obviously available in Hindi as well as English language. Both languages में आपको टेस्ट अवेलेबल रहेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. And test will be live. It will be the free live test on your Android application. So जल्दी कीजिए and enroll now for Unacademy Mega Compact. Date लिख लीजिए August 29 at 11 AM. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code, that is TDLive, for both Plus and Iconic subscription with flat 10%. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also.
try its all of the features for free using my code, that is TDL. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. Unacademy, let's crack it.